So, good morning to all of you. The sound and the video both are clear. All of you write A for audio, V for video in a chat box. Audio, video both are clear. I hope looks better. Just a minute. So let's start today's session. See, in the last period, we saw that when we have a coil and the current is flowing through the coil, okay, so there will be ऐसा लिया है आज मैंने एक मिनट. So there will be magnetic field, okay, and the formula we got that. This is the formula. यहाँ से अपन पाई पाई को कट कर दिए थे. ये फार्मूला हमको मिला था, correct? The magnetic field intensity due to a current carrying coil at a distance x on its axis and its radius is a, correct? ये फार्मूला हम लोग कल डेराइव किए थे. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन फार्मूला and it is asked almost every year. Okay, either this formula or some application of this formula means some numerical. So what are those things that should be clear? You know the mu 0 upon 4 pi, ये जो एक नया टर्म हम लोग अभी देखे हैं, इसकी वैल्यू होती है 10 raised to power -7. mu 0 upon 4 pi की वैल्यू होती है 10 raised to power -7. So जैसे अपन लोग देखेंगे, so we will write the mu 0 is equal to 4 pi into 10 raised to power -7, right? And what is mu naught? So ये it is called the permeability, or also it will be easy, more precisely to say absolute permeability. Permeability of vacuum, correct? Permeability of vacuum. Its value is 4 pi into 10 to the power -7, correct? So what is its unit and what is its dimension that we will see here. We also saw the what is B. B is the intensity of magnetic field. It is a vector quantity. Its unit is Tesla. Correct? Tesla. N is the number of turns, I is the current, and A is the radius, X is the distance. So here, when you take a distance X from its axis, so I took the current like this, so the direction of the field will be like this. Is this point? यहाँ पर आप जैसे फील्ड देखोगे तो ये ऐसा आएगा, करेक्ट? मतलब ये यहाँ पे फील्ड ऐसा. That depends upon the direction of current. So in derivation I took the current like this, but today current I took like this. ऐसा करंट है तो ऐसा फील्ड होगा, करेक्ट? तो ये फील्ड है
करेक्ट। अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा था म्यू नॉट, करेक्ट। So what is the unit of mu naught? What is the dimensions of mu naught? This you can get by this relation. यहाँ पर आप देखिए, this is the that formula we will study later on. Okay, here the magnetic field intensity inside a solenoid. Okay, mu naught n I. n जो है यहाँ पे number of turn per unit length, number of turn per unit length, and b is the intensity of magnetic field. I is the current, electric current, correct. So using this formula we can get the unit and dimensions of mu naught, correct. तो mu naught क्या हो जाएगा, देखिए mu naught is equal to b के साथ n, मतलब n by l, b के साथ l divided by n और I. So this is टेस्ला, यूनिट क्या हो जाएगी, इसके लिए हो गया टेस्ला, दिस इज मीटर, ये यूनिटलेस है, नंबर है, और आई एम्पियर करंट डिवाइडेड, तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर, दिस इज द SI unit of mu naught. You will find here also, yesterday we got one formula. Okay, at a center, when you put x is equal to 0, so field at a center, we got B is equal to mu naught n I divided by 2a. Same only you will get mu naught, this is Tesla, meter and unitless per ampere. So same unit you will get. Clear? So generally I prefer this formula to get the unit of mu naught always, because it's easy to get. मैं ऐसे चीजों को इसी से कैलकुलेट करता। अब वन मोर थिंग, एज आई टोल्ड यू हैव टू फाइंड द डायमेंशन फार्मूला आल्सो, है ना। So dimension formula for T that we have discussed for magnetic field that we have discussed already, and today we will discuss for mu naught. Okay, तो एक बार फिर उसको भी याद दिलाऊं मैं, कहाँ से आप याद करोगे इसको। so, ये यहाँ से याद करो, फोर्स जो हम लोग पढ़े थे BIL, याद है, force is equal to BIL, Lorentz force on a current carrying, Lorentz force on a current carrying coil, current carrying wire that we studied, that B into I into L, correct. कहाँ प्रांजल, बहुत दिन बाद आ रहे हो आज, क्या बात, प्रांजल कमिंग वेरी, बहुत दिन बाद आए हो। आप लोगों में से बहुत लोगों ने रिजल्ट लेने भी नहीं आए थे, है ना, रिजल्ट लेने भी नहीं गए थे। मैं पूरा दिन स्कूल में ही था, आप लोगों से मुलाकात होगी बोला था, बहुत कम लोग आए थे। आज अश्विनी नया फोन लेके आई है, मतलब कल तक तो कोई गेम के नाम से आ रही थी क्या, चलिए। सो वी हैव ए B इंटू आई इंटू एल, यहाँ से B का यूनिट आपको देखिए क्या था, है ना, दैट इज द न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। डायमेंशन फार्मूला एक्चुअली तो टेस्ला है, ML T-2 डिवाइडेड बाई करंट के लिए A ही हम लेते हैं, और ये L, करेक्ट। L is the length, I is the current, B is the magnetic field intensity, and Newton यहाँ पर है, Newton per ampere per meter. This is Tesla. This is Tesla. Okay, and this is dimension formula. So what shall we get here? Just check it out. M L0 T minus 2 A minus 1. Yeah, this is the dimension formula for B that we had to use here. Correct. So dimension formula for mu naught, we shall get, what shall we get here? Dimensional formula फॉर म्यू नॉट, है ना, यहाँ से आ जाएगा। हमने इतनी मेहनत से बी का निकाला, पहले भी निकाले थे, आप याद करिए,
यहाँ पर से B L N I, करेक्ट। B के लिए M L पावर नॉट T माइनस 2 A माइनस 1, L लेंथ इंटू L डिवाइडेड बाई N यूनिटलेस डायमेंशनलेस, और ये एक और करेंट आ गया, L यहाँ पर आ गया 1, M L1 T माइनस 2 A माइनस 2 हो गया, एक और डिवाइड हो गया। तो ये याद रखना है आपको, दिस इज द डायमेंशन फार्मूला एंड दिस इज द यूनिट, करेक्ट, TMA minus 1. Clear? And direction you can calculate either by the Fleming's right hand palm rule or by this. Okay, this is the correct. This will be the direction of magnetic field. Now let's see some other consequences of this concept, and this will be used in chemistry also. Clear? So just remember this formula: B mu naught N I upon 2A. This is the magnetic field present at the center of a circular coil, circular loop at a center. Correct? So let us assume, suppose we have a charge particle. Okay, a charge particle circulating, in a radius A. Okay, so what do you think? Will there be magnetic field at the center? What do you think? Will there be magnetic field generated at the center? Simply, it is not current. I am telling a charge particle. A charge particle is circulating. Suppose we have a charge particle Q. A charge particle is circulating. Suppose this is a charge particle Q and it is circulating with a velocity V. चार्ज पार्टिकल अभी यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, जैसा अपन जानते हैं. Its velocity is uniform, means magnitude is uniform, direction is changing. Its velocity is changing. Can you find, will there be, first of all, will there be in magnetic field at the same